Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are safe and sound at your homes. Let's start our class. In today's class, we are going to revise topics from unit number 2 map skills, chapter number 1 the importance of maps. And the first topic we are going to revise is elements of a map. There are 3 elements of a map: title, symbol, and the last one is the direction indicator. First one is title. The title should be simple. It means map's title. It should clearly show the purpose of the map. इसका मतलब कि मैप टाइटल हमें बताता है कि ये मैप किसके रिलेटेड है या किस बारे में है, एंड इट यूजुअली अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द मैप. द नेक्स्ट वन आर द सिंबल्स. सिंबल्स आर यूज्ड ऑन मैप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स. सिंबल्स किसी भी मैप पर हमें डिफरेंट नेचुरल और मैन मेड यानी इंसान के बनाए हुए फीचर्स के बारे में बताते हैं कि इस मैप में ये फीचर कौन सा है या किस लिए यूज़ किया गया है. द सिम्बल्स कैन बी पिक्चर्स, वर्ड्स और शॉर्ट एंड वर्ड्स. और ये सिम्बल्स जो हैं वो कोई भी पिक्चर से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या कोई भी शॉर्ट वर्ड्स से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. द लास्ट वन इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द मैप. इट शोज वेयर द north is located, where the east, west and south is located on the map. On most maps, north point towards the top of the map. और ज़्यादातर मैप्स में नॉर्थ जो है वो सबसे टॉप पर ही होता है. Let's revise questions. Define title. A title shows the purpose of the map. It usually appears on the top of the map. The next question is define symbol. These are the short questions from this topic and are very important. Symbols are used on maps to represent different natural or man-made features. Question number 3 is define direction indicator. It shows where north, south, east and west are located on the map. The last question, which is also very important, what is atlas? A book of different maps. Atlas is the book of different maps. और ये आपकी fill in the blanks भी आ सकती है या MCQs भी बन सकता है. Types of maps. The next topic is how many types of maps are there. Are 4 types of maps: weather map, physical map, political map and road map. Let's revise them. Weather map. A weather map shows the weather patterns in an area of a particular time. Weather map हमें किसी भी एरिया का weather बताते हैं. The next one are the physical maps. Physical maps show the physical landscape such as rivers, mountains, lakes, etc. Physical maps जो हैं वो हमें किसी भी एरिया के mountains, rivers के बारे में बताते हैं. The third one are the political maps. Political maps shows provincial and national boundaries and capital and major cities. As from the name you can guess these are mostly related to the capital and national boundaries, and capital cities are usually marked with a star or dot inside a circle. And the last type of map are the road maps. Road maps shows different highways, minor road, railroad tracks, airports and other important points in an area. It means road maps जो हैं वो हमें किसी भी एरिया के या किसी भी जगह के रेल रोड्स, रेल ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बताते हैं कि वेयर दे आर लोकेटेड ऑन दी मैप्स. लेट्स रिवाइज. Define a weather map. A weather map shows the weather patterns in an area at a particular time. Weather map हमें weather के बारे में बताते हैं. Define physical map. Physical map show the physical landscape such as rivers, mountains, lakes, wells, streams, etc. Define political map. A political map shows provincial and national boundaries and also different capital and major cities. Road maps. Road maps shows the major highways and some major roads, railroad tracks, airport tracks, cities and other important features which are located on the map or in an area. So these are the topics. Revise them. Meet you in the next class. Take care of yourselves. Allah Hafiz. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से
से भरना है।